नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्नाटक पे। जी हाँ, आपने देखा कि इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस में अंदर काफी उथल-पुथल मची हुई थी और बामुश्किल जाकर के पार्टी लीडरशिप ये तय कर पाई कि ठीक है, वहाँ के जो सबसे दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं सिद्धारमैया, जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हीं के को क्राउन पहनाया जाएगा मुख्यमंत्री का। लेकिन ये एक अरेंजमेंट किया गया है उनमें और डीके शिव कुमार में, जो कि जिनका बड़ा भारी योगदान रहा है इस पूरे चुनाव में, इस जीत में, कि 2-3 साल सिद्धारमैया रहेंगे, उसके बाद 2 साल वो रहेंगे। इस तरीके का अरेंजमेंट वर्कआउट किया गया है। अब देखने वाली बात ये है कि ये इस तरीके के अरेंजमेंट्स जहाँ-जहाँ हुए हैं, कितने सफल हुए हैं? क्या यहाँ पे इसमें सफलता प्राप्त होगी? या बीच में जाकर के कुछ ना कुछ गाड़ी पटरी से उतरेगी? आपने देखा है इसी तरीके की बात हुई थी राजस्थान में। ऑफ कोर्स वहाँ सिर्फ सचिन पायलट कहते थे कि मुझे जो है बात हुई थी 2.5 साल पे मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। जिसकी और कोई जना जो है इसको कंफर्म नहीं करता है। लेकिन इस केस में बाकायदा अनाउंस करके किया गया है, तो उस प्रकार की समस्या तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन यस, ये ज़रूर है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से थिंग्स टेक शेप, उस पे डिपेंड करेगा इसकी वायबिलिटी। इस तरीके का जो बात, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कई वरिष्ठ पत्रकार कर्नाटक से, जो इस पे प्रकाश डालेंगे, और साथ ही हमारे साथ दिल्ली से भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं। आकू श्रीवास्तव, जो बड़े जाने माने दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑथर हैं, किताबें भी लिखी हैं। हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ रहे हैं, बेंगलुरु माफ करिएगा, से बी.एस. अरुण जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रामकृष्ण उपाध्याय जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं आशा कृष्णा स्वामी, जो बेंगलुरु से ही हैं, लेकिन उनके कुछ कैमरे में प्रॉब्लम है, तो उनके ऑडियो वर्क कर रहा है, तो हम उनको ऑडियो पर ही ले लेंगे। और बहुत जल्द हमारे साथ एक और दिल्ली से पत्रकार जुड़ेंगे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उमाकांत लखेर। हम आशा जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? नहीं, शी इज नॉट ऑन द लाइन। या मैं तो बात की शुरुआत अरुण हम आपसे करना चाहेंगे। हाउ डू यू हाउ डू यू सी द पिक्चर इमर्जिंग? आपको लगता है कि ये अरेंजमेंट इस तरीके का जो किया गया है, काफी झगड़ों के बाद, काफी जो अगेन मतलब बीजेपी को हरा तो दिया कांग्रेस ने, लेकिन अंदर की जो लड़ाई है, वो लड़ाई खत्म हो पाएगी या आगे चल करके फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है? Sir, finally, they have come to an understanding, the Congress party leaders. It was a very good show as far as the election was It'll be concerned. good if you can speak in, since you can speak Hindi, Mr. Upadhyay doesn't speak Hindi, so it will be nice अगर आप हिंदी में बोले। सर, ये अच्छा हुआ है कि कांग्रेस ने अनाउंसमेंट अभी ऑफिशियल घोषणा भी किया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बनेगा और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, वो बनेगा। तो 4-5 दिन तक ये चलता रहा। दिल्ली में बैठक हुई, बेंगलुरु में पहले बैठक हुआ था। कल रात शायद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुआ सोनिया गांधी के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे थे और वरिष्ठ नेता भी थे। तो इसके बाद ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बनेंगे और उप मुख्यमंत्री डीके बनेंगे। तो ये दोनों क्या कुछ नेताओं, इसमें ऐसा भी अरेंजमेंट है कि 3 साल बाद डीके हाँ शिव ये भी, कुमार को चीफ मिनिस्टर? हाँ अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ये भी कहा है कि ये 30 महीने ये भी डीके शिव कुमार अच्छा, मुख्यमंत्री बनेंगे बाद में। अच्छा, तो तो 30 मंथ्स का हाँ, टेन्योर रखेंगे। अच्छा, 30 मंथ्स। तो मुझे लगता है अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में क्या होगा तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि सबको पता है कांग्रेस में रेबेलियन जो होना बहुत आसान है, भाजपा की जैसा नहीं है। क्योंकि हाईकमांड जो भाजपा का है वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन कांग्रेस का जो हाईकमांड है, ये हाईकमांड तो है लेकिन स्ट्रांग तो इतना नहीं है। तो हमको देखना पड़ेगा कि कैसे ये 1 साल या 2 साल चलेगा। उसके ऊपर निर्भर होता है कि शिव कुमार कोई प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा। ये ये तो मिस्टर रामकृष्ण उपाध्याय,
ये जो बात हो रही है कि ये अरेंजमेंट इस तरीके का, डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट वर्क्स? एंड देन हाईकमांड वाला जो बात है, कांग्रेस में भी एक टाइम में हाईकमांड होता था विच वाज द लास्ट वर्ड, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है. Thank you, Ashad. You've been able to join. We'll just come to you in a minute. Yeah. Upadhyay ji. Mr. Upadhyay, can you hear me? Yeah, I can. Can please go ahead. Yeah, now I can. Now, the very fact that this has dragged on for 4-5 days, and an issue which should have been settled in Bangalore has been brought to Delhi, and then all the ugly tamasha that happened in front of Kharge's house, and then Shiv Kumar's house, and all that. All this could have been avoided. I feel that this shows that the Congress High Command is not strong as it used to be. Earlier, we have seen that the observers would come, take the opinion of the legislators, and just make the announcement. And in fact, there have been occasions when even the taking the opinion was perfunctory. The High Command would have already decided on who should be the chief minister, and they would bring a slip in the pocket and just read it from that and say so and so is the chief minister, and everybody would accept it and clap. But that situation has changed now so dramatically that two regional leaders have made the Congress High Command go in rounds before finally they agreed to some kind of arrangement. How stable is this arrangement? How long this will last? Whether they will be able to really share power? Because see, what has happened now is Siddharamaiha, what he wanted, has got. That is, become the chief minister. Shiv Kumar tried his best to be the chief minister because he knows this is his best chance to be the CM, and he put up a fight till the end, and he has got deputy CM post, and reluctantly is accepting it because he is the only one who's going to be. In fact, if the Congress High Command were to say we're going to have two more, he wouldn't have agreed. I'm sure he wouldn't have, because he wouldn't want to share that position with others, because you are equating him with the people like MP Patil or Parameshwar, whose contribution is minimal. So finally, the very fact that he has been made the deputy CM who will enjoy that position alone, though constitutionally there is no provision for that. I mean, he can't take oath as I'm taking oath as a deputy CM. There is no such provision. So this is only an informal arrangement where he will be the deputy CM under Siddaramaiah. And this 30 months sharing of power, I don't know how stable it will be. Because from day one, Siddharamaiha has been saying very clearly that people of this state and the other legislators want me to be the chief minister for 5 years. So I don't think he's going to budge after 30 months. And of course, Shiv Kumar, for the time being, he has accepted this, and we'll have to see how things move on from here. It's not going to be an easy task. आशा कृष्णस्वामी जी, आपको क्या लगता है कि इस तरीके का अरेंजमेंट जनरली जहां भी हुए हैं, बड़ी मुश्किल से इस तरह के अरेंजमेंट चलते हैं, वी हैव सीन इन द पास्ट. और यहाँ पर जो आपको जो दोनों के रोल्स जो इलेक्शन के दौरान रहे हैं, who do you think has played a more dominating role in the campaign, and whether do you think that this is going to be a lasting arrangement? And see, when we look at, you have asked 2-3 questions. One is during campaign, who worked better? See, nearly 60% of the voters they come under OBC category. So naturally, Mr. Siddaramaiah is drawing strength from that, assuming that all OBCs are with him, and he is the face of OBCs. But Okaligas, Shiv Kumar did he hired so many agencies to strategize and campaign, both have played their own role. But the unfortunate thing is that the whole thing is a mockery of democracy or whatever, because it is reduced to caste. We are today looking at both as caste leaders again. Did not Lingayats moved away from BJP and trusted Congress? If at all there is only one deputy CM, where is the question of Lingayats being accommodated? There is nothing, as Mr. Upadhyay pointed out. Asha ji, I'm sorry to interrupt you, but caste, unfortunately,
is a reality, is a harsh reality in this country, in all states. Yeah, but it is more prominent in Karnataka. If you go to Maharashtra, maybe language-wise, they are in Gujarat. It is not that. In Karnataka, this is very peculiar. Whole thing is always it boils down to caste. Today, where does Mr. Siddharamaiha draw strength? It's because of OBC. He's a Hinda leader. That is how he's projected. Where Mr. Kshivkumar is drawing strength, not because he's, he could not campaign earlier. Also, he tried his best to move to North Karnataka to establish himself as pan Karnataka leader, but he failed. So, if we look at this arrangement, what transpired in Delhi, there is nothing called high command in Congress. It is only it was Kshivkumar and Siddaramaiah who were dictating terms, and finally Mr. Kharge was caught between the two because he happens to be AICC president and then he is from Karnataka. So this question of debating whether high command is there, there is nothing called high command as of now in Congress. So, and also it's become a low command. CLP, there is absolutely, as Mr. Upadhyaya was telling, this is, see, why did they hold a CLP meeting? They didn't want to go for voting. Okay, today why you are calling CLP? When Kshivkumar is dead against this head count or voting, why do you want to call CLP then? I mean, I don't know. I mean, if you want to appoint Mr. Siddharamaiha, like sealed cover syndrome can continue. If you wanted to account, please Kshivkumar because he's a highly resourceful person in courts, then you do it. This is, now the question is now cabinet formation. Again, it will be 50-50, is it? Then again, what about the Lingayats? Who will talk from Lingayats' point of view? Or there are so many other communities which have supported Congress today. Who would be the voice? And then why, despite Mr. Kharge being the AICC president, why Dalits, this one is not even considered? In what way Mr. Dr. Parmeshwar was not qualified for the post? Should everybody go to Delhi and lobby? I mean, I don't know. This is not the way Congress, with so much mandate, the blessings of the people, it could have, taken better decisions. But it should have not boiled down the entire thing to, it is not, chorus outside Congress office should not have decided. It's like judges taking decisions outside the court hall if there is chorus. That's the way I look at it. But it is, as Mr. Upadhyaya pointed out, it is not easy for Congress to manage balance between the two leaders. So if there are any problems, where does these two leaders have to go? That's the question we have. Right. बहुत आपने सही बात कही है और ये खतरा तो रहेगा ही। आकुश वास्तव आपने तमाम देश के विभिन्न जगहों पे आपने इलेक्शंस देखे हैं, आपने इस तरह के हालात से भी डील किया है एज अ जर्नलिस्ट। आपको क्या लगता है कि ये जो बात है, ये बात सही है कि हाई कमांड जो शब्द कॉइन हुआ था वो कांग्रेस में ही हुआ था पहली दफा। अब ये अलग बात है कि आज की डेट में वो हाई कमांड सही माने में बीजेपी में है, जहां वन मैन रूल चलता है। एक जमाने में कांग्रेस में भी ऐसे ही चलता था। ये दिखलाता है कि कांग्रेस की सो कॉल्ड हाई कमांड अब सो कॉल्ड हो गया है, उसकी वो पकड़ नहीं है नीचे पे। और जैसा इन्होंने आशा जी ने कहा, ये भी बात सही है कि खड़गे साहब का भी जो है उस तरीके का वर्चस्व नहीं दिखता है ये अपने ही स्टेट में। तो इस ऐसी सूरत में क्या ये आपको लगता है कि बहुत दिन चलेगा? आकुश रास्ते आपको आपकी आवाज आ रही है? जी हाँ प्लीज, हाँ बोलिए। आपने हमारी आवाज नहीं आ रही थी क्या आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ प्लीज बोलिए। देखिए, जहां तक मैं, क्योंकि बीच में आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अगर आप सवाल दोहरा देंगे तो फिर थोड़ा अच्छा होगा। हाँ नहीं बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पहली चीज जो आशा जी ने, उपाध्याय जी ने कही कि कांग्रेस हाई कमांड नाम की चीज एक जमाने में हुआ करती थी, और ये हमारा मानना है कि कांग्रेस में ही ये हाई कमांड वर्ड कॉइन हुआ था। लेकिन आज की डेट में वो बीजेपी में तो दिखता है कि एक अकेले नरेंद्र मोदी डिसाइड करते हैं सब कुछ, लेकिन कांग्रेस में अब वो पकड़ नहीं रह गई है उस हाई कमांड की।
वही नतीजा है कि इतने दिन लगे यहाँ पे लीडर डिसाइड होने में, और आज की डेट में भी जो जिस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है वो ढीला ढाल लगता है। आगे चल के किस तरह के कॉम्प्लिकेशन होंगे और क्या ये कितना लंबा चल सकता है। शरद, पहले तो आभार, क्योंकि आपसे पहले बात करने की कोशिशें हुई लेकिन जो हो नहीं पाई, और क्योंकि मैं कर्नाटक के दौरे पर रहा और फिर और दौरे चलते रहे इधर-उधर में, तो इसलिए बात नहीं हो पाई। लेकिन जो मैं प्रशंसा करूँगा आशा जी की, आशा जी ने बहुत मार्के की बात की और बहुत थ्योरेटिकली करेक्ट बात की कि जी परमेश्वरन, क्या अगर पूजा नहीं कर सकते हैं, हाईकमान के दौरे नहीं लगा सकते, तो वो क्या उसमें नहीं हो सकते? वो भी तब जब खास तौर से SC/ST का वोट बैंक कर्नाटक में बहुत सारा है। क्या पाटिल को मौका नहीं मिल सकता था? क्या इन दोनों को ही खुश करने में हाईकमान लगा रहा? ये सब बड़े सवाल हैं और मुझे लगता है जितना अच्छा कांग्रेस ने परफॉर्म किया, जितना एग्रेसिवली काम किया, जितने अच्छे तरीके से कर्नाटक में सत्ता वापस लाई, वो आज मैं ये कहने पे मजबूर हूँ 6 दिन बाद कि वो उस पेस को कांग्रेस रिटेन नहीं कर पा रही है, और इसका असर निश्चित रूप से जो सब जानते हैं 24 है उसमें पड़ना तय है। वजह जो कारण उन्होंने आशा जी ने भी गिनाए हैं उसको, और बहुत सही तरीके से गिनाए हैं कि अब लिंगायत का क्या है। लिंगायत एक ऐसी बड़ी आकुश श्रीवास्तव का कनेक्शन कट गया है। बीएस अरुण, ये आपको लगता है कि ये जो वीकनेस दिख रही है कांग्रेस में, इसका एडवांटेज बीजेपी किसी तरीके से उठा सकती है? बिकॉज यहाँ ठीक है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कांग्रेस के पास नंबर ऑफ सीट्स मोर देन डबल है बीजेपी की, नहीं तो अगर कम होती है, अगर बॉर्डर पे होता तो ऑपरेशन लोटस चल जाता है। लेकिन स्टिल ऐसी भी सूरत में आगे चल करके बीजेपी कर सकती है क्राइसिस कांग्रेस के लिए। और कर्नाटक में और कर्नाटक में जैसे मतलब भाजपा का आधा भी नंबर नहीं है, 65 उन्होंने लिया है और मेजॉरिटी मार्क है 113। और आप मान लो जेडीएस इनके साथ आएगी, वो भी नहीं होगा क्योंकि जेडीएस के पास भी नंबर नहीं है। तो कर्नाटक में इनकी शायद कुछ नहीं होगा, तो इसलिए कांग्रेस सेफ है। मतलब कांग्रेस इज सेफ एज ऑफ नाउ unless there is a split in the party. So but then BJP will try to continue to make some प्रॉब्लम कर सकती है बीजेपी क्रिएट कर सकती है प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि पहला चैलेंज कांग्रेस की सामने है कैबिनेट फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लोग चुनाव जीत के आए हैं और कास्ट वाइज सबको रिप्रेजेंटेशन देना है, रीजन वाइज सबको रिप्रेजेंटेशन देना है। इसकी बाद ये शिव कुमार ने क्या क्या कंडीशन रखा है लीडर्स के सामने, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी पब्लिक नहीं किया है हाईकमांड ने। जो लीडरशिप है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कोई उन्होंने बोला नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि अब कांग्रेस यहाँ से कैसी चलती है, तो प्रशासन कैसी होगी और क्या क्या मिस्टेक्स करेंगे और इसकी फायदा भाजपा ने कैसे उठाएगी। I think they have to see all these things. But right now, Congress is in a fairly good position as far as BJP's dominance in other states is concerned. हाँ, ये बात तो सही है। और आकुश श्रीवास्तव, आपकी बात कट गई थी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात ये जिन्होंने जो पॉइंट आउट करी थी, ये कि इनके हिसाब से बिल्कुल सेफ है और बीजेपी इसका शायद फायदा उठाना बीजेपी के लिए आसान नहीं हो पाएगा, कोशिश जरूर कर सकती है। आपको आवाज आ रही है? नहीं, आई थिंक आकुश श्रीवास्तव का कनेक्शन अभी भी ठीक नहीं है। आशा जी, आप यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस।
Can you please? Would you think BJP is BJP likely to take advantage of this, and what kind of advantage can BJP take? Because BJP has done it in the past, but only in states where it has had good numbers. Here, unfortunate for them that they are less than half of the Congress as far as the numbers are concerned. But still, even if JDS joins them, still they would not have a number to create trouble, crisis for the Congress. No, democracy unfortunately has reduced to number. जहां तक So, मैं अब आकू अभी आपका उसका संदर्भ आशा जी बोल रही हैं, आपका हम वेट कर रहे हैं। आकू आपको आवाज आ रही है? रहता हूं क्योंकि जो आशा जी, कैन यू जस्ट हैंग ऑन बिकॉज़ ही इज नॉट एबल टू लिसन। हां, अभी डीके शिव कुमार नहीं, आकू आपको आवाज आ रही है? आपका कनेक्शन बहुत गड़बड़ है, आपकी आवाज कट रही है। आकू श्रीवास्तव, प्लीज लिसन। में जो सरकार please, Asha ji, carry on. He is not able to listen to me, and I'm sorry. I want to tell that democracy has reduced to numbers now. So in that game, BJP is far behind Congress this time. So they had to put their house in order before trying to do any circus. So as of now, I don't see, as Mr. Arun said, there is no chances of BJP doing any miracle at this point. Maybe it all depends on how Congress will remain united and how these two leaders strike a balance between their, there should be good equation, good understanding, and then they had to send positive up to Lok Sabha election. Definitely there will be that honeymoon period will continue. Later we have to see. It's not easy for Mr. Siddharamaiah to relinquish any post. He has always been highly ambitious. When he didn't lead the party also, he went on to become chief minister. So he has never headed Congress party. He was twice he was deputy CM, and then even he was not happy with that. When he was leader of when Mr. Kharge was appointed as the leader of the opposition, he was sulking, and then he was seen, he ensured that he was seen with Mr. Yediyurappa. They both took same helicopter to one of the northern Karnataka. So he can be rebellious. So we have to see how these two leaders, because going by the Karnataka's experience with coalition or any understanding, it is very poor. We don't have good understanding. We have not seen that kind of maturity by our leaders. So we have to see. But BJP is not in a position to take any advantage. Without numbers, it can't do anything. Even combined opposition can't do anything. I think JDS must have lost even the third, this one, because of the vote share. We are yet to get official statistics. It's a totally demoralized party now. I can understand. Aku, आपका connection वापस आ गया क्या? Let me make a point here, if I can. Yeah, Mr. Wadia, please go ahead. I agree with 70% of what Asha said, that BJP cannot do anything at the moment. But she also said that hopefully the period for Congress, I'm not very sure of that. Will they be able to work together for another 1 year without any hassles between them? I'm not very sure, because the Shiv Kumar is not at all happy that he has been denied the chief minister's post, and he thought it was his right now, because he kept saying that whoever was the president has been made chief minister. See, there have been many instances earlier when KPCC president has gone on to become automatically the chief minister. Whatever claim Mr. Siddaramaiah, I think DK this time had, I would say that he contributed more than Siddaramaiah, because he was in terms of resources or in terms of action. Because I'm told that he is a man of resources. Yeah, and also he rebuilt the party. Remember what it was when they lost 2019 election. They just won one Lok Sabha seat, which was the worst performance that the Congress had performed. And to bring it to this level, where the Congress could get such a huge majority, I think organizational capabilities of Shiv Kumar was responsible for this. So he should have been rewarded, because he had the experience. He 8 times MLA,
And I think he deserved more than Siddaramaiah, because Siddaramaiah already had one full term and he had lost an election being the chief minister. So all this, should have come into consideration before, handing it over to Siddaramaiah. Anyway, what is done is done. And I don't know to what extent Shiv Kumar will cooperate with Siddaramaiah, unless Siddaramaiah is able to recognize all these factors and, gives some space in the government. Siddharamaiah is not known to be giving space to anybody else. So if that doesn't happen, the honeymoon that Asha is talking about may last just for about a month or so. So you are not at all hopeful that this will go, not a question of lasting, but it may not even take off if it is going to be that bad. No, Siddharamaiah should learn that, he has to give space to other people to perform. That is his minus point, that he can write roughshod over other people, but you should realize that Shiv Kumar had as much or more role in the victory that has just been achieved. Right. Well said. Well said. B.S. Arun, आपका क्या मानना है? क्या आप मानते हैं कि सिद्धारमैया का रोल से ज्यादा डोमिनेंट रोल रहा है डीके शिव कुमार का, इसलिए एज मिस्टर उपाध्याय सेज कि he was a more deserving candidate for that position, and that is why it is unlikely that he would be satisfied with this. And और दूसरी बात ये उनका कहना ये है कि सिद्धारमैया साहब जो है किसी को स्पेस नहीं देते हैं, और उसकी वजह से आपको लगता है क्या इस तरह की सिचुएशन अराइज हो सकती है कि अर्लियर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कि भाई 60 महीने तो बहुत दूर की बात है, कितने महीने चल पाएगा? हाँ, मैं सहमत हूँ जो आशा ने कहा और उपाध्याय जी ने कहा। ये सबको पता है कि सिद्धरामैया किस तरफ का आदमी है। मतलब ये मास लीडर तो है ही, लेकिन इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में और इनकी जो पर्सनालिटी में लोगों को पता है कि ये सिद्धरामैया काफी मतलब he doesn't give space to others, तो ये तो तय है। और पहले जो हुआ है, इनकी जो 5 साल इन्होंने प्रशासन किया, उस वक्त fortunately for him there was not much of rebellion. So this time he has to ensure कि he gives space to Shiv Kumar so that there won't be any major contradictions in the policies. There won't be any differences with Shiv Kumar or even his followers. In the ये तो आप एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बट विद योर एक्सपीरियंस आप जानते हैं, दोनों के तरीके जानते हैं, आपको लगता है कि ये फीजिबल है कि दोनों शांत बैठ जाएं, अपनी अपनी एम्बिशंस को किनारे करके ऑब्जेक्टिवली चलाएं एडमिनिस्ट्रेशन? इट इज डिफिकल्ट। मुझे तो लगता है कि इतनी आसान नहीं है, क्योंकि दोनों का बहुत मतभेद होगा। देयर पर्सनालिटीज आर डिफरेंट। I think Shiv Kumar to some extent listens to others, but Siddaramaiah doesn't listen to others. So he knows what he should do and he goes by that. He's a rigid person, and I think to have a discussion with him on the pros and cons of an issue, I think would be difficult for even to his followers. So to that extent, convincing Siddaramaiah might become difficult. For even the high command. But अरुण, आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस पोजीशन में हैं कि अपनी बात को प्रिवेल करा पाए विद द सपोर्ट ऑफ दिल्ली इन लोगों के ऊपर, इन दोनों के? जो लास्ट पिछले 2-3 दिन में हुआ, मुझे तो नहीं लगता है कि खड़गे ने, अगर कोई डिफरेंसेस अराइज होगा फ्यूचर में, खड़गे साहब कन्विंस करेंगे, तो दे हैव टू फॉल बैक ऑन द गांधीज अगेन. I think this is where the problem might come. The Gandhis may not intervene for each and everything, and that's where the problem. वो तो करना भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल, उनको बार-बार इंटरवीन करने से तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. जी, I fully agree with that, but in Congress things work out differently.
it's a very difficult task. आशा जी, जिस तरीके का सीन लगता है, तो all is not going, it's not going to be a smooth sail for the Congress at all. जिस तरीके का आप लोग फोर्सी कर रहे हैं, आप लोग को ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उससे बेटर और कौन जान सकता है। लेकिन ये सब देखते हुए क्या आपको लगता है, अभी जो पहली चीज तो सबसे बड़ा हर्डल है कैबिनेट फॉर्मेशन, और हर जना चाहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों लीडर्स चाहेंगे कि हमारे मैक्सिमम लोग आ जाए। उसके बाद आएगा गिविंग रीजनल रिप्रेजेंटेशन एंड कास्ट रिप्रेजेंटेशन, एज यू योरसेल्फ पॉइंटेड आउट कि कास्ट कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सारा बैलेंसिंग एक्ट आपको लगता है सिद्धारमैया में कैपेबिलिटी है करने की, या मल्लिकार्जुन खड़गे में इतनी डोमिनेंस है उनकी, हो सकेगी कि कर्नाटक में वो बैलेंस आउट करवा पाए? Mr. Arun pointed out rightly that Mr. Siddaramaiah is very rigid. See, if his only left ears are open, left in quotes, then it will be difficult, because DK Shiv Kumar goes midway. He is not anti anything, you know. See, where the problem comes is in the cabinet meetings when policy decisions have to be taken, and when laws draft acts have to be prepared before to present in the house. There will be a lot of this one, because Karnataka is a state where land is a huge issue in business. Okay, there should be some actually. So Mr. Siddharamaiah is seen as pro-poor. When it comes to social welfare schemes, he is always one step ahead of others. That is his commitment. That is the way he has been brought up, and that is his thinking also. But unfortunately, DK Shiv Kumar may not see the same, he may not hold the same views. He's after all a businessman. For me, he looks like a businessman. So whether this high command, I think we need to forget high command. There is nothing called high command. As I said, these two leaders have to strike a fine balance. Whether, see, last time also Mr. Siddaramaiah did not like coordination committee or anything. So this time I don't know whether they will have a sort of there should be a person to bring rapture between these two leaders, and every day there could be clashes, that the BJP, JDS, and then media will be eagerly waiting. It is on a notice. I mean, they'll be watched. The Congress leaders will be watched, and they are not sending good message as of now. It looks like divided house, and they have not even met. I think they should see eye to eye, to run the government. That I don't see as of now, because they come from different school of thoughts. No, Asha, they met for breakfast at KC Venugopal's house today. Yeah, but on their own, they are not. Somebody has to be there. Yes, yes. From Bangalore, they didn't. Mr. DK Shiv Kumar didn't want to go to Delhi. But when I look at the way Mr. Shiv Kumar has been treated by the so-called High Command, it is not sending good this one. They used he slogged. He slogged, because at one point he was humiliated by Siddaramaiah. When he was chief minister, he was not allowed to enter cabinet for nearly 1.5 years, Mr. DK Shiv Kumar, because he was facing cases and he continues to face cases. And then he had told Shiv Kumar that, not now, let the Lok Sabha elections be over. So later he approached Sonia Gandhi and somehow got a position, a berth in the cabinet. So from 2013, this is continuing. Outsider, insider, that divide is there in the Congress. लेकिन आशा जी, ये जिस तरीके के झगड़े हैं, these kind of infighting, that was visible in the BJP also. Supposing they had won, so there would have been a lot of dissent against Yediyurappa also. And we have seen how during the election, Yediyurappa was sulking because the party had sidelined him. So this is a bada routine cheese in any political party. And just because it is the Congress here today, and which has come out of the woods after a long time, और बहुत बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद पावर में आए. But at the same time, as you rightly said, कि क्या इनके लिए रिटेन करना, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर आकर के तो ये तो उनको तसल्ली हो गई है
दे आर रेस्ट एश्योर्ड कि अब तो कोई ट्रबल नहीं क्रिएट कर सकता। तो अपनी कांग्रेस का जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो सेफ फुटिंग पे होते हैं, तो उनका आपस में ही इनफाइटिंग इतनी हो जाती है कि उनको दूसरे का खतरा नहीं की जरूरत नहीं है। दे आर इनफ ऑफ क्रिएटिंग ट्रबल फ्रॉम विद इन। तो ऐसी सिचुएशन आपको लगता है कि इज लाइकली टू अराइज? या It depends what Mr. Siddaramaiah will decide more than DK Shiv Kumar, because Mr. Siddaramaiah is, as I said, he's highly ambitious. One thing is there should be transparency. Public should know what is the agreement between the two. We don't know, as Mr. Arun pointed out. We don't know. See, this is some thing which Congress has to. Otherwise, there will be a lot of speculation, and both leaders will get annoyed with media. Speculation will continue because that is our job we will be doing. If people right. have given such a huge mandate, it is the duty of the Congress to maintain some transparency so that there won't be open fights between the two. They had to wait. At least when JDS and BJP had the 2020 months agreement, both did not deny that it was 2020 agreement. But we don't know what is the agreement drawn yesterday. And then Mr. Siddharamaiha has to now, after 2 or 3 years, we don't know, he has to vacate, he has to bring in his MLA, I mean, son as MLA, and then he has to position his grandson. He has a long wish list. You won't retire so easily from electoral politics is fine. But I mean, as you said, everywhere this is the same parties, political parties have this situation, how maturely they handle. But if at all there is high command, whether they take proper decision, leaders or not, they had to be guided and they had to be controlled. But that is not there in the case of us. Look at Rajasthan, what is happening every day. We are seeing road protests. आई नो ये तो and वो जो बात मैं कह रहा था कि कांग्रेस क्रिएट्स ट्रबल फॉर इटसेल्फ, एंड वो हिंदी में एक कहावत है अरुण की, कभी ऐसे तो कहा जाता है कि कुल्हाड़ी पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, लेकिन कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो कुल्हाड़ी पे पैर मार देती है। सो दे इनवाइट ट्रबल फॉर देमसेल्फ। तो ऐसी सिचुएशन में अरुण और फाइनल कमेंट कि आपको व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, आपका ये हिंदी में बताइएगा कि आपका हाउ डू यू फोरसी कि क्या होने का अल्टीमेटली, जब इतना ट्रबल अभी से है, टीदिंग ही ये तो चलिए टीदिंग ट्रबल मान ले, बट आपको कैसा लगता है आगे 5 इयर्स में क्या क्या हो सकता है? सर मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंडेट जो है ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ये बहुत टेनुअस होगा, मतलब इट्स अ बिट वल्नरेबल ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स फॉर, क्योंकि हर चीज में ये क्या इन दोनों की सहमत है, इसमें सहमत नहीं है, ये लोग पूछेंगे कि वेदर दे आर वन, दे आर दे यूनाइटेड। तो बहुत मुश्किल होगा शायद, जैसे आशा ने कहा कि नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल तो शायद ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये थोड़ा हमको देखना है। I think it's not going to be a smooth affair. हाँ, एंड किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, मतलब क्या कांग्रेस अपना ज्यादा नुकसान करने तक की स्टेज में भी जा सकती है इन फाइटिंग की वजह से? देखिए ये 2 चीजें हैं यहाँ। डीके शिव कुमार वो काफी लॉयल सोल्जर है कांग्रेस का, ये कभी पार्टी नहीं छोड़ा है। मुझे शायद पहली बार वो इंडिपेंडेंट बन के चुनाव जीता, कांग्रेस ज्वाइन किया, और उसके बाद he has not seen he has not looked back, so he continued in the party. तो of course he has got many मिनिस्टर थे, और उसके बाद अब पार्टी में केपीसीसी प्रेसिडेंट बन गए और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब सिद्धरामैया का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, वो कभी उनको सारा पद मिल गया है। मिनिस्टर था 1918 में 80s में, जब हेगड़े गवर्नमेंट थे उस वक्त भी मिनिस्टर था। उसके बाद जयेश पटेल गवर्नमेंट हो या देवेगौड़ा का या धर्म सिंह का, देन ही बिकेम चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। लेकिन उन्होंने कभी खुद पार्टी फ्लोट नहीं किया, पार्टी स्थापित नहीं किया। तो रीजनल हो या ही ओनली जॉइन द पार्टीज एंड देन
of course, his contribution was there. Nobody can deny that. So this is the sort of history of these two leaders. तो मुझे फिलहाल नहीं दिखता है कि somebody will break the party and go out. राइट. तो बिल्कुल आप दोनों की बात से और जो पहले उपाध्याय जी ने भी बोला, सबकी बात से जो, और आप लोग वहां ग्राउंड जीरो पर हैं और जो आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उससे बेहतर और कोई नहीं बता सकता है. और बिल्कुल ये जो एप्रीहेंशन है कि इट मे नॉट बी, खाली यही बात नहीं कि नॉट एवरीथिंग इट मे नॉट बी अ स्मूथ सेल इन द नेक्स्ट 5 years. अभी तो बिगिनिंग में क्या होता है, और बात ठीक आशा जी ने कही कि जब तक लोकसभा चुनाव है तब तक तो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो बड़ी फिक्र की बात होनी चाहिए कांग्रेस के लिए. और अभी से अगर कुछ अंकुश नहीं लगाया गया तो सिचुएशन बिगड़ सकती है. और अगर 2024 में लोकसभा में कांग्रेस को कहीं मुंह की खानी पड़ी बीजेपी से, जो कि हो भी सकता है क्योंकि वो मोदी का इलेक्शन होगा, तब सिचुएशन कांग्रेस के अंदर बिगाड़ने के लिए बीजेपी उसका जरूर फायदा उठा सकती है. तब ये कहा जाएगा, और तब तक के लिए ये भी कह सकते हैं हम, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप. और आगे क्या होता है देखते जाइए. लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ भी होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच किस तरीके से कांग्रेस फंक्शन करती है आज की डेट में कर्नाटक में. यही सबकी फिक्र की बात है, सबसे ज्यादा फिक्र की बात है और देखने वाली बात. आज के लिए इतना ही. आप सबका इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत